हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णास मैथ्स। आज आम प्रोबेबिलिटी थर्ड वीडियो स्टार्ट करवा। सेम पैटर्न रे क्वेश्चंस करवा। 1 मार्क के क्वेश्चन 3, गोटे 4 मार्क रो क्वेश्चन, गोटे 6 मार्क रो क्वेश्चन। एमती ईच चैप्टर आम चार वीडियो बनवा। आउ जदि चैनल रो नुआ अछंदी आउ टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो पूरा मोर ये प्रोग्राम सरू सरू तुम पूरा बुक रो रिवीजन सर जाए। जदि मो चैनल रो नुआ अछंदी मो चैनल को सब्सक्राइब कर देबे, शेयर कर देबे, बेल आइकन को प्रेस कर देबे, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करबे पीडीएफ को डाउनलोड करिया पे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ए बैग कंटेन 7 व्हाइट 9 ब्लैक बॉल्स। गोटे बैग अच्छे जो 7टा व्हाइट बॉल अच्छे और 9टा ब्लैक ball अच्छे। If a ball is drawn at random, one ball is to be selected at random. What is the probability that it is white? How many white balls are there? Look, n of s is equal to 16 na, total 16 balls अच्छे। 16 to गोटे select करिए तो n of s equal to 16. Now what is n of a? Required is 7 white balls, huh? And one white is to be selected out of 7 in how many ways? 7c1, which is equal to 7. And p of a will be equal to n of a divided by n of s. Now what is n of a? N of a equal to 7, n of a equal to 16. Simple as that. बुझीगला? आगु को बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन करिवा। 2 dice are rolled in succession. दीटा डाई को आमे गोटे पर गोटे रोल कले in succession, मतलब one after the other. Find the probability that the first die shows at most 3. At most 3 माने at most 3 माने maximum 3, maximum 3 माने 3 या उससे कम। ठीक है। And the second shows an odd number not less than 3. Odd number not less than 3. What do you mean by that? Odd number होबो किंतु 3 टू कम होबनी, मतलब 3 होबो या 3 टू अधिक होबो। n of s केते होबो? n of s is equal to 36. 2 dice are rolled in succession, n of s will be 36. Find the probability that first die shows at most 3. तो n of a केते हो? at most 3 माने 1 हे पारे, 2 हे पारे, 3 हे पारे। बेसी रु बेसी 3 माने 3 या ताटू कम, 1 2 3 हे पारे। एंड द सेकंड डाई शोस एन ऑड नंबर नॉट लेस देन 3. नॉट मतलब 3 टू छोट होबनी, 3 हे पारे या टू बड़ हे पारे, 3 हे पारे या टू बड़ भी हे पारे। बड़ मतलब 5 होबो, 2 सहित 3 होबो या 2 सहित 5 होबो, 3 सहित 3 होबो या 3 सहित 5 होबो। सो दीज आर द टोटल नंबर ऑफ केसेस। ठीक अछि। फर्स्ट थ्रो रे कोन हला? एटमोस्ट 3। एटमोस्ट 3 माने बेसी रु बेसी 3 होबो, माने 3 या ताटू कम होबो, माने 3 हे पारे, 2 हे पारे, 1 हे पारे। लिख देले हम। सेकंड डाई रे कोन आसीबो? गोटे ऑड नंबर आसो किंतु से 3 रु कम होबो। 3 रु कम होबो माने 3 होबो या टू बेसी होबो। या टू बेसी होबो माने ऑड नंबर 1 टू 6 भितरे 3 टू बेसी कोन कोन रहले? 3 टू 3 या 3 टू बेसी, दैट इज 3 एंड 5। तो 1 सहित 3, 1 सहित 5, तो टोटल ये कितने केसेस है? एटा हेगला 6 केस, राइट। या को अपन ए लिख दियो तो काहे ना एटा सेट अछि, राइट। ये सेट अछि। और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कोन लिखबे? n of a। n of a इक्वल टू 6। तो व्हाट इज p of a? p of a इज इक्वल टू n of a divided by n of s. n of a equal to 6, n of s equal to 36. 6 upon 36 will be equal to 1 upon 6. तो 1 by 6 अपन आंसर। क्वेश्चन खाली पढ़ी बुझिए, एथर एटा डिफिकल्ट प्रोबेबिलिटी। इफ ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस इन सक्सेशन, गोटे डाई को हमें दी थर थ्रो कले 1 by द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर्स इज 8। जदि दी थर डाइस को थ्रो कले n of s के गेला 36 एंड सम ऑफ द नंबर्स इज 8। सम ऑफ द नंबर्स 8 माने कोटा कोटा 8, 2,6 हे पारे, 6,2, 3,5, 5,3, 4,4। ओनली दिस केसेस। 1,7 इन दिसो कहबे नहीं, काहे डाई रे 7 आसु। ठीक अछि। तो 1 2 3 4 5 हमन केसेस 5। आउ को केस अछि जे चेक कर। 2 6 6 2 दुटे जा केस 8 पाइबे टोटल, 3 5 5 3 या 4 4 पाइबे। 6 2 अधिक होबनी, राइट। तो टोटल 5 केसेस। दिस इज n of a equal to 5. तो p of a will be equal to n of a divided by n of s. So n of a will be 5, n of s will be 36. So 5 upon 36 will be the answer. Okay. Next question करिवा। Question is, let a and b be events with p of a 1 by 3, p of a union b 3 by 4, p of a intersection b 1 by 4, p of a union b complement भीतर अच्छे एंती अच्छे क्वेश्चन। a union b complement, करेक्ट। नाउ लुक कौन देछि? गिवन p of a is equal to 1 by 3। तो
So P of A complement kete hijibo? P of A complement equal to 1 minus P of A. So this is equal to 1 minus 1 by 3 and that is equal to 2 by 3. And P of A union B, P of B is given. So P of A union B is equal to P of A plus P of B minus P of A intersection B, right? So P of A is 1 by 3, P of B required minus P of A intersection B is 1 by 4 and P of A union B is given as 3 by 4. So 1 by 4 को पता है 3 by 4 plus 1 by 4. 3 by 4 plus 1 by 4 equal to 1 by 3 plus P of B. 3 by 4 1 plus 1 by 4 is 4 by 4 मतलब 1 by 3 को पता है minus है गला. So this is equal to P of B and 1 minus 1 by 3 is 2 by 3. So P of B will be equal to 2 by A into probability of B is 2 by 3, right? Now P of A union B complement. What is required? A union B complement. कोई भी इवेंट और प्रोबेबिलिटी माने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट माने 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट, करेक्ट? कॉम्प्लीमेंट प्रोबेबिलिटी माने 1 माइनस इवेंट और प्रोबेबिलिटी माने 1 माइनस कॉम्प्लीमेंट प्रोबेबिलिटी. सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट. डिमॉर्गन्स लॉ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट. तो ए कॉम्प्लीमेंट है बी कॉम्प्लीमेंट इज बी. 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज 1 माइनस दिस. तो 1 माइनस ए देखो जार कॉम्प्लीमेंट ना से टोटल इंटरसेक्शन माइनस कार कॉम्प्लीमेंट ना बी कॉम्प्लीमेंट ना ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर. दिस इज द फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी. सो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 2 by 3 minus probability of A intersection B is given as 1 by 4. A intersection B given 1 by 4. So 2 by 3 minus 1 by 4. So this is equal to 1 minus 4 into 2 will be 8 minus 3 divided by 12. And this is equal to 1 minus 8 minus 3 will be 5 by 12. 12 minus 5 will be equal to 7 upon 12. This is your answer. A step टा होचे important step. A union B complement equal to एटा गोटे event धरनियंतु. If this is the event, this is A, then probability of A equal to 1 minus probability of A complement. तापर डिमॉर्गन्स लॉ अप्लाई करबे. A complement equal to A complement union बन जाएगा intersection B complement is B. तो A complement intersection B. So that is equal to P of B minus P of A intersection B. Solve कर दे, value substitute कर दे. Now the next question. P of A equal to 0.4. Given P of A is equal to 0.4. P of B by A. P of B by A is equal to 0.3. B by A माने P of A intersection B divided by P of A. And this is equal to 0.3. मतलब P of A intersection B कहता है P of A multiply 0.3 into P of A. And P of A is 0.4, so 0.3 into 0.4, which is equal to 1.2. Sorry, 0.12. 0.12. So this is equal to 0.12. This is A intersection B. Now probability of A is given. So what about probability of A complement? A complement equal to 1 minus probability of A. So this is equal to 1 minus 0.4 and this is equal to 0.6. Now, what else is required? P of B complement divided by A complement. This is conditional probability equal to P of B complement intersection A complement divided by P of A complement. This is equal to given as 0.2. So therefore, P of A complement intersection B complement. This is equal to 0.2 into probability of A complement. Probability of A complement is given as 0.6. So this is equal to 0.6, which is equal to 0.12.
तो A complement is probability of A union B the whole complement, and this is equal to 0.12. This is equal to 1 minus probability of A union B. This is equal to 0.12. So probability of A union B will be equal to 1 minus 0.12. This is equal to 0.88. 0.88. So this is equal to P of A plus P of B minus P of A intersection B, and this is equal to 0.88. P of A is 0.4. Substitute कर दो 0.4. P of B required A intersection B 0.12 equal to 0.88. तो P of B will be equal to 0. एटा को ए साइड नहीं ଯିବେ प्लस हो गला आ 0.4 माइनस हो गला माने 1 माइनस 0.4 दिस इज इक्वल टू 0.6. सो ये आपका आंसर बुझिगला. सो दिस इज द थर्ड वीडियो. आ ए क्वेश्चन आपन आस्थिला 2013 रे केबे आस्थिला एटा 2013 रे. सो ऑलमोस्ट टेक्सचुअल क्वेश्चन आपन आछि ऑलमोस्ट टेक्सचुअल क्वेश्चन आछि किंतु प्रोबेबिलिटी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ए चैप्टर गुडा रियली डिफिकल्ट चैप्टर जेतले पर्यंत क्वेश्चन न बुझ पारे सेतले पर्यंत आंसर करबाटा डिफिकल्ट. सेत पे मोर सब वीडियो को ध्यान रे देखिबे आ देखिला पर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करियो मो सहित. क्वेश्चन मु लेक्चर आपन लिखबे क्वेश्चन को मो सहित प्रैक्टिस करियो जेंति जेंति प्रैक्टिस हेइ चलियो क्वेश्चन आपन को बन चलियो. देखुछन पसंद करछन मो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे. टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन करिवे. टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन कला पर मोर सब पीडीएफ आपन एटू डाउनलोड कर परिबे. ओके तो नेक्स्ट वीडियो नहीं कि आसबे आ से पर्यंत गुड लक.